Hello and welcome dear viewers to the series of my SQL. By now we have learned SQL commands categories, key constraints, DML commands in detail, and even the use of relational, logical, mathematical operators. In this video we would be learning the use of in, not in, between, not between, is null, is not null operator practically in SQL. The in operator allows us to specify multiple values in a where clause. आपको अच्छे से ध्यान होगा, हम जब भी अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना चाहते हैं तो जो कमांड DML कमांड यूज होता है वो है सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल हमें हमारे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स के सारे एट्रीब्यूट्स दिखाता है. वहीं अगर हम अपने टेबल के कुछ स्पेसिफिक कॉलम, कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स देखना चाहते हैं तो हम उनका नाम एस्ट्रिक की जगह मेंशन कर सकते हैं. और अगर हम सारे रिकॉर्ड्स की जगह कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड, जैसे जिन बच्चों का रिमार्क गुड है या जिनका रिमार्क सेटिस्फैक्ट्री है, ऐसा देखना चाहते हैं तो भी हम वेयर क्लॉज के साथ ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं. फॉर दिस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस in which we have practically done all these commands. The use of in operator is actually a shorthand for multiple or operator. जब एक या दो पर्टिकुलर सिचुएशन को हमें मैच करना है तो और ऑपरेटर का यूज ओके है. बट व्हेन इट इज मोर देन दैट, then in that case you may use in operator. Let us see this with an example. See here, this example here, it is showing where in with values in parenthesis. So हम चाहें तो कुछ particular values को in के बाद parenthesis में mention कर सकते हैं और फिर आपको query के return में उन्हीं वैल्यूज के बीच की वैल्यू मिलेगी. See this with this particular example of the table with the name EMP. We can see here there are 7 records, 7 tuples with employee ID, name, age, address and salary. अब हम इसमें in operator का यूज करेंगे. Syntax of finding records would be same, that is select asterisk from table name. asterisk मतलब सारे कॉलम्स, सारे एट्रीब्यूट्स दिखाएगा आपको. कौन सी टेबल से? EMP टेबल से. where का मतलब रिकॉर्ड्स जो होंगे वो स्पेसिफिक होंगे क्या? जिनका एड्रेस या दिल्ली या बिलासपुर या पटना में है. So when we execute this command, you see instead of all 7 records we are getting only 3 records, but these 3 records are belonging to Delhi, Bilaspur and Patna. तो इनने क्या किया? इनने एड्रेस कॉलम में से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स उठाए जिनमें एड्रेस जो है ये 3 लोकेशंस में से था. आप देखिए कंप्लीट टेबल को अगर हम देखें तो इसमें पुणे, मुंबई सब है, लेकिन आउटपुट में क्या मिला हमें? सिर्फ दिल्ली, बिलासपुर और पटना. सी दिस अनदर एग्जाम्पल. दिस इज शोइंग सैलरी इन 2000, 4500 and 10,000. So we are getting output of 4 records wherein the salary is along the value 2000. You see there are 2 records with 2000, 1 record with 4500 and 1 record with 10,000. So in is going to select the value whatever values are mentioned inside these parentheses. Coming up next is not in operator.
This is just the opposite of in operator. It follows the same syntax. You need to mention here the column name along with the table name and not in values. That means जो value हमें नहीं चाहिए, that has to be mentioned in the parenthesis. So see this example, ये वही 3 cities हैं, Delhi, Bilaspur and Patna. But now instead of in it is written here not in. यहाँ not in लिखा हुआ है. तो अब जो output में हमें 4 records मिल रहे हैं, उनमें दिल्ली, पटना और बिलासपुर छोड़ के बाकी सारे एड्रेसेस हैं. So hope this concept is clear. When to use in and when to use not in. Coming up next is between operator. नाम से ही समझ में आ रहा है किसी particular value के पिन in between. मतलब between operator में हमेशा साथ में and का भी use होता है. This and gives a range. It gives you a range with minimum and maximum value. Now these values can be text, can be numbers, can be dates even. So this is going to include beginning and the finishing value. Syntax: select column names from table name, where column name is between लिखा, उसके बाद minimum value and maximum value. सिंटैक्स में ये याद रखना है. कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं बिटवीन मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, एंड की जगह 2 वर्ड्स यूज कर देते हैं, विच इज अ रॉन्ग सिंटैक्स, एंड देन यू वोंट गेट एनी मार्क्स फॉर दैट as well as you won't get any output for this. So see the example over here. It's mentioned here now, between the salary 2000 to 7000. Now you see carefully, this is showing us the record with the salary 2000 also, क्योंकि 2000 और 7000 included है. 7000 क्यों नहीं आया? क्योंकि किसी भी रिकॉर्ड की सैलरी 7000 नहीं थी, लेकिन 6500 तक की रेंज कवर हो गई. 2000 ऑलरेडी था टेबल में, तो वो भी इंक्लूड हुआ है. इसी का जस्ट ऑपोजिट है नॉट बिटवीन ऑपरेटर. नॉट बिटवीन में आपकी सिंटैक्स में क्या एक चेंज आने वाला है? द सिंपल चेंज इज यू विल राइट डाउन हियर नॉट बिटवीन मिनिमम वैल्यू and keyword maximum value. Others would be same, select column names from table name. Not between में आप values भी देंगे, बीच में and भी देंगे, लेकिन इन दोनों values को include करते हुए वो ये range को छोड़कर आपके records check करवाएगा. See this example, not between 2000 and 7000. So you see now the output is not including any value where 2000 was mentioned. आपने देखा था पिछले ही आउटपुट में 2 रिकॉर्ड्स थे जिनमें 2000 सैलरी वाले आउटपुट में टपल्स डिस्प्ले हो रहे थे, बट नॉट बिटवीन इज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू, और ये दोनों मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दैट इज 2000 एंड 7000 को भी काउंट करेगा साथ. Then like operator, this is also of very good use in finding out the tuples. It is used with where clause for searching a specific pattern, like I don't remember the entire name. Then in this like operator we have 2 wildcard characters, and those 2 wildcard characters are, one is your percentage sign, another is your underscore sign. The percentage sign represents 0, 1 or multiple characters, whereas underscore specifies single character. जब हम percentage लगाएंगे तो कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू वो हमको सर्च करके दे देगा. वहीं जब अंडरस्कोर लगाएंगे तो सिंगल्स अंडरस्कोर को काउंट करके ही की कॉम्बिनेशन ढूंढेगा. सिंटैक्स वुड बी
including your select command. So what is your select command saying? Your select command is again same, select column names from table name, where column like pattern. See this syntax now? This example I'm mentioning, select asterisk from AMP where name like K percentage. See this output, ये सारे नेम्स के बाद परसेंटेज लगा हुआ है ना, तो के बाद आप देखिए 4 कैरेक्टर्स, मोर देन 4 कैरेक्टर्स, ये सारे ही डिस्प्ले हो जाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेइंग ए परसेंटेज, मतलब वो सारे ही नेम वेयर ए परसेंटेज है दैट वुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड. सेकेंड पोजीशन में ए, सी दिस केयरफुली, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में ए मेंशन्ड है सारे ही एट्रीब्यूट्स में. सी दिस, ओके. Few more example with percentage, with instead of percentage now underscore. See here there are 1 2 3 underscores, so we are getting MAHI, Mahi. Here it is salary 200 and then percentage, so after 200 we are getting the values as many after 200. So like is very much useful when you need to find out certain values in a huge table in the database and you are exactly not knowing the specific combination that you want to search for. Then you may go ahead with this like operator. This would help you for both beginning and ending. You see beginning and ending both OH. Now it can give you, this OH can give you examples like Sohan and Mohan. Here you see underscore in the beginning and percentage at the end. इसका मतलब एक underscore है beginning में, मतलब एक कैरेक्टर होगा फर्स्ट, सेकेंड कैरेक्टर तो आर ही होगा, और एंडिंग में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं. अंडरस्कोर में क्या हो रहा है, के अंडरस्कोर 1 2 3 4, इसका मतलब टोटल कैरेक्टर्स तो 5 होंगे जिसमें कि के पहला है, और बाकी के 4 जो हैं वो डिफरेंट 4 कैरेक्टर्स के नेम को आपको पिकअप करके दिखा देगा. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. A percentage n means we are specifying the first letter would be A and last letter would be n. बीच में आपके number of characters कोई भी हो सकते हैं. So like is also very much useful in finding out the records. Next is your null values. In my previous video I have already covered how to insert a null value while inserting values in a particular table, as well as how to apply not null constraint. I would like to suggest you to go through that video for getting your concept clear for null value. Null represents a missing value or an unknown value. रिमेंबर नल का मतलब ज़ीरो नहीं होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नल का मतलब ज़ीरो नहीं होता है. नल का मतलब फ़िलहाल हमारे पास उस कॉलम पर्टिकुलर टपल के लिए वैल्यू नहीं है तो हम उसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं. लाइक सम चाइल्ड हैज़ नॉट प्रोवाइडेड ब्लड ग्रुप और आधार नंबर, बट इन फ्यूचर ही और शी वुड बी प्रोवाइडिंग मी दैट, तो हम टाइम बिंग उसको खाली छोड़ देंगे, बाद में उसमें वैल्यू फिल कर देंगे. दैट इज नोन एज नल वैल्यू. सो देर आर 2 ऑपरेटर्स, इज नल, इज नॉट नल. इज नल हमें वो वैल्यूज ढूंढ के देगा जहाँ जहाँ नल प्रेजेंट है, मतलब जहाँ जहाँ कोई सेल आइटम एंटर नहीं हुआ है. दिस is null operator can be used along with select command, update command or delete command.
syntax would be same, select column name from table name, लेकिन column name is null. तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, केवल वो रिकॉर्ड्स जिनकी वैल्यू null है. In this example, see, if I want to see who are the employees who have yet not given their email IDs, then the syntax can be email is null. You see, out of 7 records, only there are 2 records who have not submitted the email. We can find out and notify them. Isn't it? We can find out easily and notify them. The same we can see in our record. We do have the students who have not given exam and their marks are right now null. So we can also mention here, select asterisk from first where marks is null. And you see here when we mention where email is null, we got the records जिसमें email attribute में null value entered था. अपने क्वेश्चन में email की जगह हम कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं, marks column. And you see now, instead of 7 records, I am getting only 2 records. Why? Because their marks are null. You see here, there are 7 records, only there are 2 records where marks are null. So we can ask these 2 students to give retest and then when the marks appear, they can be entered. इसी का opposite is not null. See this also practically. So it is returning me the other 5 records जिसमें marks आपके null नहीं हैं. So these two work just vice versa to each other, but they are very important while working upon the table. Same ways like is null, not null is also used to check values for non-empty values. It will return you true if null value is not found. Fine. This can also be used along with select, update and delete command. Syntax you have already seen. It is same. Select column names from table name, whereas the column name which you want to find out as is null is not null. So I hope you would be able to perform the same practically. Keep practicing, dear viewers. Stay connected to us for our further videos in which we would be now learning about very important data definition language commands. Few of the DML commands would be discussed in our further videos. So please stay connected.